Online students able to see the slides? Yes. Okay. कैसा रहा? हालत खराब? लेकिन एप्टीट्यूड हुआ हो गया ना? कैसा था? अच्छा था, इजी था? इतने लोग थे, कितने बजे? कम 1,500 लोग, कम से कम 1,500 लोग होंगे, 1,500 1,500 100%। जो पार्किंग का है, जो बीएमआई के नीचे का वो फुल, उधर का जो लाइन में भेजा था आपको बस से। ओके। एंड एवरीवन इज देयर, लाइक फ्रेशर्स, एक्सपीरियंस और सैटरडे जिनके पास ऑफर था ऑलरेडी, अदर मतलब कंपनी से वो भी ऑफर लेके गए हैं, जो बोल रहे थे कि मतलब उनका ऑलरेडी रेफरेंस है, उनको सिर्फ आगे इंटरव्यू देना है नाम का, रेफरल्स होंगे वो इनसाइडर्स। हाँ हाँ। तो आपका कितने बजे फिर हुआ एप्टीट्यूड? मैं 11 से पहले मैं था, 12 बजे उन्होंने गेट बंद कर दिया, 12 बजे से लेना बंद कर दिया, फिर 11 बजे से 4 साढ़े 4 बजे तक। तो आप कितने बजे निकले? मैं 2:15 के बाद। ओके। हम पानी मेरे तो हालत खराब थी। अभी ये सर 30 जून को फिर से ट्राई करेंगे, फिर से वॉकिंग। अभी फिर वॉकिंग में जाने का मतलब नहीं था, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ रश यू कैन एक्सपेक्ट नाउ। तो बेटर नाउ, मतलब आपका अभी क्या रिजल्ट आता है उसके ऊपर थोड़ा वो डिपेंड करेगा। बट ठीक है, चलो, कंपटीशन बहुत है मतलब बाहर, ये चीज तो कंफर्म है। और एक्सपीरियंस वाले थे ना सर, तो फिर वो तो उन्होंने क्राइटेरिया भी ऐसा रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं वो ठीक है, दैट इज फाइन। एक्सपीरियंस सी स्टिल यू कैन बीट देम। ऐसा नहीं है कि मतलब उनके पास 5 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस है और स्टिल दे कैन मेक इट। नो, आप भी कर सकते हो, बस इंटरव्यू में कुछ अच्छा करके आ जाओ, दैट्स द ओनली क्राइटेरिया। आपका मतलब दैट इज शेड्यूल्ड नेक्स्ट? अभी बोलने वाले हैं। ओके, प्रोबेबली कल, मतलब हाँ वर्किंग में ही है। चल, नॉट एन इशू। ओके, सो यस्टरडे वी हैव सीन वो नोट्स का। आई हैव आस्क्ड देम कि मतलब जो हमने कल किया था, ठीक है, ट्रेड लाइफ साइकिल का, तो ग्रुप में पोस्ट किया हुआ है। आपने कुछ वो अलग कलर कॉम्बिनेशंस यूज करके बनाए हुए क्या नोट्स? हाँ, तो वो एक बार पोस्ट कर देना, ठीक है। द रीजन इज कि सीएस एंड सीए पीपल मेक बेटर नोट्स देन रेस्ट ऑफ द, ठीक है। ओके, तो थोड़ा बहुत वो कर सकते हैं। एंड आई विल बी सेंडिंग वन लिंक ऑफ द वीडियो आल्सो, मुझे पिंग कर देना, तो एक बार में आप ट्रेड लाइफ साइकिल क्या है वो पता चल। वैसे आज आ ही जाएगा कहीं ना कहीं डिस्कशन में, ठीक है। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड विद दिस ट्रेड्स व्हिच आर कैरिंग आउट? तो जब हमने यस्टरडे जब पढ़ा था, तो ट्रेड लाइफ साइकिल में क्या थे, इतने स्टेजेस थे, फ्रंट ऑफिस, मिडल ऑफिस, बैक ऑफिस। फ्रंट ऑफिस में क्या होता है, ट्रेड इनिशिएट होता है। इनिशिएशन मतलब आइदर बाइंग और सेलिंग, okay, execute होता है at whatever prices or the quantities which are being mentioned by the client, or that captured will be done based on the note which will be generated. Note is more of like the details of the all the trade transactions. Middle office में क्या होगा, verification के लिए जाएगा. Verification will be done against the data set you are already having, either the static data or the dynamic data we have talked about. Okay, validation, validate करेंगे, एक अलग से टीम होगी, validate मतलब क्रॉस चेकिंग होगा वापस से। ओके, ऑल द प्राइसेस, अगर हमने एग्जांपल कर लिया था रिलायंस का, तो रिलायंस के 1000 क्वांटिटीज एट 2500 प्राइस, अगर वहां पे 100 क्वांटिटीज सिर्फ लिखा हुआ है, तो वैलिडेशन के जंक्शन पे ट्रेड रुक जाएगा, आइदर ऑन होल्ड और कैन बी कैंसल्ड। ओके, कैंसिल इसलिए होगा बिकॉज क्लाइंट इज नॉट हैविंग द फंड्स इन हिज पर्टिकुलर अकाउंट। होल्ड पे इसलिए होगा बिकॉज ऑफ अ मैन्युअल एरर, वो 100 और 1000 का टाइपिंग एरर। ओके, फिर आएगा रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग के लिए भेजा जाता है जनरली फॉर द बैक ऑफिस ओनली, मिडल ऑफिस विल नॉट डू द रिपोर्टिंग, बट यस दे नीड टू अपडेट दैट पर्टिकुलर डेटा इनटू देयर पर्टिकुलर इंटरनल सिस्टम्स। ओके, लास्ट में आता है बैक ऑफिस। व्हाट इज बैक ऑफिस एग्जैक्टली डूइंग? तो वंस द कंफर्मेशन इज डन ऑफ द ट्रेड, मतलब जो ट्रेड एग्जीक्यूट करना था उनको, वो कंफर्म हो गया, राइट, कि अच्छा ये क्वांटिटी पे इस प्राइस पे रिलायंस के पर्टिकुलर शेयर्स हमको चाहिए थे।
ऐसे खींचेंगे. ओके, ठीक है. And then there will be settlements. So settlement कैसे होता है? The amount will be debited in the client's account and the equal amount of shares or the securities which are purchased will be credited. This is how a journal entry will be created. And last में reconciliation आता है. But reconciliation entry और step by step instruction that particular transaction के हिसाब से नहीं आएगा. It will be either fortnightly basis or monthly basis. जब एक साथ सबका अकाउंट सेटल करने के लिए जब बैठेंगे तब उसका रिकंसिलिएशन आएगा. ठीक है. दिस इज मोर ऑफ लाइक अ ओवरव्यू ऑफ द ट्रेड लाइफ साइकिल. अब यहाँ पे विच आर द डिफरेंट रिस्क एसोसिएटेड. सो फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट रिस्क फैक्टर्स. सो विच आर द डायरेक्ट वंस. सो व्हेन बाइंग फॉर एग्जांपल पेइंग मोर कैश देन द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज. जूम इन तो कर देंगे लेकिन आज वो प्रोजेक्टर का प्रॉब्लम आना चाहिए. दिख रहा है क्या? Okay. So direct factors or the direct risk factors will be which one? So say for example, if the client is paying more cash मतलब 2500 रुपीज रिलायंस का शेयर 1000 क्वांटिटीज 2.5 लाख उसको डिपॉजिट करना था, गलती से उसने 3 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए या 3,50,000 डिपॉजिट कर दिए. सो दैट इज वन ऑफ द एरर्स और द रिस्क एसोसिएटेड. पेइंग द करेक्ट अमाउंट ऑफ कैश बट विदाउट साइमल्टेनियस रिसीप्ट ऑफ द सिक्योरिटीज. तो क्लाइंट ने पे तो कर दिया बट क्लाइंट को कंफर्मेशन भी तो जाना चाहिए ना कि यस वी हैव रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 2,50,000 एज अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन. प्रॉब्लम कहां पे आती है? सिंस देयर आर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस गोइंग ऑन, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ट्रांजैक्शन होगा तो ये ट्रैक नहीं हो पाएगा कि किस ट्रांजैक्शन का किस कौन सा पैसा आया हुआ है. ठीक है. एंड स्पेसिफिकली व्हेन द सेम अमाउंट्स विल बी कोलाइडिंग. तो 2.5 लाख उसने दिस रिलायंस बाय करने के लिए भेजा था, ये दूसरा 2.5 लाख का जो एंट्री होगा वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के लिए भेजा था. तो दैट विल बी एक्चुअली क्रिएटिंग द ट्रबल्स व्हाइल एंटरिंग द डेटा इनटू द सिस्टम. ओके. Then there will be specifically errors occurring when selling, so receiving lesser cash value than the market value of the securities and delivering securities without simultaneous receipt. So same thing क्या हो सकता है? कम पैसा भेजा है, 2.5 लाख की जगह उसने सिर्फ 1.5 लाख रुपए भेजा हुआ है. करेक्ट. तो वहां पे और दिक्कत, मतलब दैट 1 लाख रुपीज विल बी स्टिल आउटस्टैंडिंग इन हिज अकाउंट. तो उसको मेल भेजना पड़ेगा या नोटिफाई करना पड़ेगा कि प्लीज सेंड द रिमेनिंग अमाउंट सो दैट वी कैन कंक्लूड और कंप्लीट योर ट्रांजैक्शंस. ओके. That is another error. And similarly, during the time of selling the securities, you are not informing the client that we have executed the transaction. ठीक है. अब कभी कभी क्या होता है कि क्लाइंट ने आपको इनिशियल सेटलमेंट इंस्ट्रक्शंस में बोल दिया था कि यस प्लीज सेल द रिलायंस शेयर्स व्हेनेवर दे आर रीचिंग टू अ प्राइस ऑफ 2700. 2500 पे लिया था, 2700 का अगर भाव होता है तो प्लीज सेल माय सिक्योरिटीज. बट अभी ये दिक्कत हुआ, उसको बीच में ऐसा कहीं से न्यूज आया या तो फिर ये पता चला कि अच्छा ये 2700 नहीं, ये रिलायंस का भाव तो 3000 तक जाने वाला है. बट ही एक्चुअली फॉरगॉट टू इन्फॉर्म यू एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर. तो आपने तो यार सेटलमेंट इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से भेज दिया कि हाँ ठीक है सेल कर दो, 2700 पे बोला हुआ था. उसका फिर दूसरे दिन ईमेल या कॉल आएगा कि नो आई एक्चुअली वांटेड टू होल्ड माय सिक्योरिटीज बैक एंड नाउ माय रिवाइज्ड टारगेट्स आर 3000. तो उस टाइम पे भी आपका रिस्क फैक्टर विल बी क्रिएटेड. ओके. Indirect factors are losing the clients through provision of slow and inaccurate level of services. So this is more of like the concept of the services management over here. Okay, not direct. If you are not providing on time services, on time emails नहीं भेजते हो, on time कोई cross check या verify नहीं करते हो, या फिर आप update नहीं करते हो system में, then definitely the client will be frustrated and he will not come to know कि उसकी portfolio की current position क्या है. ठीक है. तो मेजर चैलेंज क्या करेगा? जेपी मॉर्गन से निकाल के अकाउंट शिफ्ट हो जाएगा मॉर्गन स्टैनली. वेरी सिंपल. So that is an indirect risk. Third, trading error. The trader actually makes a mistake at the time of trade execution. That is, the trader deals at a price which is significantly different from the market price or agrees to settle on the free of payment basis without realizing the risk. दो तरीके ट्रेडिंग एरर्स है. The first trading error is कि 2500 पे करना था या 2550 पे करना था, whatever the buying was mentioned, और गलती से उसने कर दिया 2450 पे. टाइपिंग whenever I am typing it and when I am pressing the enter button, already trade execute हो गया for example, लेकिन करना था 2550 पे, वो बाद में रियलाइज हुआ. ठीक है. तो that is another manual error that can be occurring. Second, what is free of payment? फ्री ऑफ पेमेंट वही सिचुएशन है जहां पे
that client is actually having a long term relations with the company as well as with you. 5 साल से आप उसके साथ काम कर रहे हो. अब उसको एक्चुअली एक इंस्ट्रक्शन आया कि प्लीज बाय दिस पर्टिकुलर शेयर्स, आई विल बी ट्रांसफरिंग द अमाउंट इन 2 to 3 days. अब 2 to 3 days तो जाने तो 2 या 3 हफ्ता हो गया, उसका पेमेंट नहीं आया. आपने सिक्योरिटी खरीद के रखा हुआ है, पैसा कैसे सेटल करोगे उसका? ना डेबिट एंट्री हो रहा है यहाँ पे पैसों का, और ना यहाँ पे क्रेडिट एंट्री आप जमा कर पा रहे हो. तो बिकॉज ऑफ विच रिकंसिलिएशन भी प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है, so that is that known as free of payment basis method, where the securities are already purchased but the amount is not actually get settled in the entire transaction. Clear? Another risk factors are trade enrichment error and trade recording error. So what is trade enrichment error? The calculation of the trade cash values is incorrect. Why? Because the number of days of the accrued interest on the bond that you have calculated is incorrect. अब से ऐसा नहीं है सिर्फ डीसीसी कन्वेंशन में आपका कैलकुलेशन एरर आएगा. whenever you are counting the number of days between that given dates, say for example मैं बोलता हूँ 4th अप्रैल से लेकर 8th अगस्त तक, तो गलती से प्लस और माइनस 1 or 2 days हो गया वहां पे, तो अमाउंट विल बी लार्जर, based on which your interest calculation will also be larger. तो एक दिन का इंटरेस्ट भी कम से कम 5 या 10,000 डॉलर हो गया, then also you are at loss. Clear? So that is known as trade enrichment. Unless and until you are not clarifying or enriching the data, this error will be there forever. Okay. And the last one is trade recording error. The trade has been captured with one or more particular components that differ from those which were actually in fact executed. So say for example, a quantity of 10 million was purchased, but recording के time पे सिर्फ 1 million ही आपने एंटर किया. ट्रेड सही तरीके से किया कि क्लाइंट ने बोला क्या ठीक है $10 million के आप शेयर्स खरीद लो, आपने खरीद भी लिए 10 million के, but at the time of entering the instructions into the system you mentioned $1 million. ठीक है, clear? Any doubts in this? Okay. So just write down the different risk factors associated with the trade life cycle: direct, indirect, trading errors, trade enrichment errors, and trade recording errors. Description में लेकिन नाम ही लिखना है. Trade recording error. Recording. Okay. Done. See now how the tradings are carried out between different clients and between different custodians of the clients. So trading company एक यहाँ पे है, उसका custodian है which is located in Sydney. His account number is given. ठीक है. काउंटर पार्टी जो है उसका custodian he is located in Melbourne. उसका account number यहाँ पे. Located मतलब उसका जो भी investment banking account होगा या जो भी account होगा that is located in Melbourne. Okay. Now how you are actually comparing the data sets over there? So as an investment banker, you have to connect with this custodian also, and as an investment banker, you have to connect with this custodian also. Specifically, whenever you are dealing for the money market instruments, okay? तो हमने वो level 1 में एक example देखा था. If you remember that SBI and Bank of Maharashtra during the time of liquidity crunch situation, investment banker was taking a commission of 0.25% at both the end, right? But वो तो local level पे था, but at global level you will be facing a similar situation. और यहाँ पे तो सिर्फ सिडनी मेलबर्न मतलब ऑस्ट्रेलिया ही है, लेकिन यहाँ पे सिडनी होगा, दूसरी जगह लंदन होगा, तो और दूसरा चैलेंजेस, उनके टैक्सेशन नॉर्म्स, उनके स्टॉक मार्केट के टाइमिंग्स या मनी मार्केट के टाइमिंग्स. सो यू विल बी डीलिंग लाइक यू आर वर्किंग 24 आवर्स.
आधी शिफ्ट आपकी सुबह काम कर रही होगी, आधी शिफ्ट आपकी रात में काम कर रही होगी. दिस इज द रीजन दैट मेनी पीपल आर एक्चुअली रिक्वायर्ड टू वर्क इन नाइट शिफ्ट्स. व्हाई? बिकॉज उनके मार्केट के टाइमिंग्स के हिसाब से आपको काम करना है. यू आर नॉट डायरेक्टली डीलिंग विद द इंडियन कैपिटल मार्केट्स और इंडियन मनी मार्केट्स. ठीक है, you have to deal with the money markets across the world. So you need to make sure that you are available at the point in time when the markets are operational. और इसलिए जब भी आप अपनी इंडियन मार्केट्स को देखते हो ना, तो 12:30 बजे और 1:30 बजे मार्केट के मूवमेंट्स को देखना. अचानक से FIIs का जो सेलिंग आता है ना, वो उसी टाइम पे आता है. बाकी सुबह 9:15 से लेकर 12:30 पूरा फ्लैट होगा या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा. अचानक से 12:30 बजे क्यों होता है? लंदन स्टॉक मार्केट एक्सचेंज ओपन्स, ओके, एट 12:30. तो उनके वहां से FIIs के आउटफ्लोज आना स्टार्ट होंगे. और सिमिलरली 1:30 को डाउ जोन्स फ्यूचर्स विल बी टर्निंग अराउंड समवेयर, तो वहां से दूसरा FII का लॉट आएगा फॉलो अप सेलिंग के लिए. ठीक है, क्लियर? ओके. So now how the counterparties and the custodians will be working. So say for example there is company name WSIL which is issuing a settlement instruction to its custodian, telling the custodian that Sydney has to receive 50 lakh of shares of News Corporation, okay, ordinary shares against the payment of the relevant cash amount. मतलब 50 लाख के न्यूज कॉर्पोरेशन के शेयर्स खरीदने हैं इस अकाउंट में by transferring the whatsoever amount is occurring. अगर एक शेयर का भाव फॉर एग्जांपल $10 है, तो $10 into this 50 lakh quantities, that amount has to be settled in the counterparty's account. और हमको शेयर्स खरीदने हैं. PTIF is issuing a settlement instruction to the custodian, who is actually the custodian B of another company, जिसके पास वो शेयर्स है, राइट? तो PTIF क्या करता है कि to deliver the shares against the relevant cash amount to the custodian A. तो custodian B amount भेजता है, shares भेजता है custodian A को, and custodian A will be sending the relevant cash amount to custodian B. फिर जाके वो फाइनली ट्रेड अकाउंट सेटल होगा. ठीक है, इज इट क्लियर? एनी डाउट इन दिस? कस्टोडियन ए जो है, से फॉर एग्जांपल आई एम अ बायर, यू आर अ सेलर, राइट? आपके पास शेयर्स होंगे, मैं किसी से तो खरीदूंगा. कहां से खरीदूंगा? 50 लाख शेयर आपके पास होंगे तो मैं खरीदूंगा. तो यू आर द सेलर, आई एम द बायर इन द ट्रांजैक्शन. बट आप से फॉर एग्जांपल वो कस्टोडियन है आपका और शी इज माय कस्टोडियन, तो आई विल बी इंस्ट्रक्टिंग हर कि आपसे 50 लाख के शेयर्स खरीदने हैं, कस्टोडियन बी के अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करना है. मतलब कस्टोडियन बी विल बी मैनेजिंग योर अकाउंट, ओके. तो वहां पे पैसा ट्रांसफर करना है, शेयर्स आपको खरीदने हैं. तो कस्टोडियन के पास ही शेयर्स रहेंगे ना मेरा एट द एंड ऑफ द वंस द अमाउंट दैट ट्रेड गेट्स सेटल्ड. तो शी विल बी कम्युनिकेटिंग विद हिम, he will be having that amount, against that he will be transferring the shares. Clear? But problem is you are located in Melbourne and I am located in Sydney. Okay. Okay. So what is the objective of the custodian? All the custodians should aim to achieve a match of their clients' settlement instructions with the counterparty's custodian as soon as possible. जैसे ही ये नोट भेजती है, आई एम रेडी टू ट्रांसफर द अकाउंट, उसको कैसे भी करके वो 50 लाख के शेयर्स कैसे ट्रांसफर करने हैं वो प्रोसीजर के लिए तैयार रहना पड़ेगा. ठीक है, वन थिंग. सेकेंड, इफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट मैचिंग, द कस्टोडियंस डू नॉट हैव द अथॉरिटी टू चेंज एनी ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ द क्लाइंट्स सेटलमेंट इंस्ट्रक्शंस, but they need to advise to their client about the status of the instruction without delay. Say for example, आपको मैंने बोला था कि शेयर्स खरीदना है, ठीक है. अब $10 के हिसाब से 50 लाख शेयर्स मतलब 5 CR आई हैव टू ट्रांसफर इनटू देयर अकाउंट, ओके. बट गलती कहाँ पे हुआ? इनको ये पता चला कि मैंने 5 CR नहीं, सिर्फ 50 लाख ही अमाउंट ट्रांसफर किया हुआ है, ओके. अमाउंट वहां पे फिर आगे ट्रांसफर होगा. तो नाउ शी कैन नॉट ऑल्टर और मॉडिफाई द इंस्ट्रक्शंस बाय हरसेल्फ. शी हैज टू कम बैक टू मी एंड अपडेट मी कि सर मुझे आपका 50 लाख नहीं 5 CR का वैल्यू चाहिए, तब जाके हम आगे ट्रांजैक्शन कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे. बट शी डज नॉट हैव दैट अथॉरिटी एज अ कस्टोडियन टू मॉडिफाई बाय हरसेल्फ. ओके, इज इट क्लियर? वही एक स्मॉल डिफरेंस है. एट दैट पॉइंट द कंपनी विल नीड टू इन्वेस्टिगेट द रीजन फॉर द मिसमैच. फिर मुझे वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ऐसा मिसमैच क्यों हुआ. एक्चुअली 5 CR भेजना था, मैंने सिर्फ 50 लाख क्यों भेजा हुआ है.
So that I need to identify the error and then need to update you. क्योंकि हम दोनों clients हैं. I am a party, you are my counterparty. Then I will be sending you an email कि कुछ technical error था या manual error था because of so and so reasons. Please keep this transaction on hold जब तक I am not able to resolve this particular transaction error. Clear? When the static data is of course accurate in all the respects and the trades are enriched with the correct details, the number of unmatched instructions will be minimized. So once the trade enrichment is done, enrichment मतलब मैं बाकी के 4.5 CR अकाउंट में जमा करवा देता हूँ, तब जाके ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड आई विल बी इवन नोटिफाइंग यू एज एन ईमेल कि हाँ भाई अभी आप ऑल द डिटेल्स आर करेक्ट, all the amount is now matching, all the details are perfect, please transfer the shares to my account. You will be then notifying your custodian कि पूरा अमाउंट आ गया है. So once you receive the amount, please transfer the shares to their account. Then both the custodians will be dealing with each other. तब जाके फिर हमारा कोई काम नहीं है. So the transfer of shares would be the last thing. Yeah. Before that, only the settlement of amount. Yeah. क्योंकि पैसा और शेयर्स कस्टोडियन के पास है इसलिए सेफ है. डायरेक्ट अकाउंट टू अकाउंट डील होता से फॉर एग्जांपल ओटीसी मार्केट, देन दैट क्रेडिबिलिटी रिस्क रहता है. बट सिंस वी आर एक्सचेंजिंग दिस ऑन द एक्सचेंज और या फिर एनी ट्रस्टवर्दी मतलब कोई इंटरमीडियरीज है, तो देन देयर इज नो पर्टिकुलर इशू ओवर देयर. Now what are the different trade validation components? First one is your trading book. Yesterday हमने trading journal या trading book discuss किया था. Second is your trade date and execution date. Value date जिसको बोलते हैं. Trade time. कल मैंने आपको वो नोट भी एक दिखाया था that Zerodha का कि कैसे हर एक details are captured. Okay. And then comes your final settlement instructions. So basically just a minute. Trading book में क्या होता है? Zooming नहीं हो रहा है. अब क्लियर है? अभी भी बेटर? थोड़ा ट्रिम हो रहा है यहाँ पे, बट डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. सो ट्रेडिंग बुक में क्या होता है? इट इज मोर ऑफ लाइक अ जर्नल और लॉग बुक which will be restricted to specific transaction types, that is principal amount, specific instrument groups, Swedish equities, वो ठीक है, that you are not concerned about, but you need to be aware about what all details will be going into the trading book. Second, trade date will be there. So what is a trade date? So the trade date should be today for a new trade and cannot be in the future. It should be today or in the recent past for an amended date and should be a business day. Business day मतलब working day होना चाहिए. तो जैसे yesterday I gave an example, 18 जून को ट्रांजैक्शन डेट आप डिसाइड करते हो, एग्जीक्यूशन आपका होता है वैल्यू डेट के ऊपर. सो इट इज नॉर्मली द स्टैंडर्ड सेटलमेंट साइकिल फॉर द सिक्योरिटी ग्रुप. पहले हमारे यहाँ भी T+2 days का सेटलमेंट था. इफ एनीवन नोस व्हाट इज सेटलमेंट? आज मैंने शेयर्स को बेच दिया, दैट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू माय डीमैट अकाउंट आफ्टर T+2 days, मतलब आज के दिन के 2 दिन बाद. So say for example if it is today Sunday, Sunday तो वर्किंग नहीं होगा, मंडे से काउंट करते हैं. तो मंडे जब मैंने बेचा, T+2 डे क्या होगा? ट्यूसडे, वेडनेसडे, कौन? थर्सडे को मेरे डीमैट अकाउंट में पैसा जमा होगा. इट इज नाउ रिड्यूस्ड टू T+1 बाय सेबी. ओके, तो मतलब अब वेडनेसडे को ही पैसा आ जाता है. प्रॉब्लम क्यों होता है कि उस अमाउंट का मैं कुछ तब तक के लिए कुछ खरीद नहीं पाता हूँ या बेच नहीं पाता हूँ. व्हाटएवर आई वांट टू डू, होल्ड पे रहता है. ट्रेड टाइम, सो ऑफ कोर्स द ट्रेडिंग टाइम कल 12:30 बजे और 1:08 वाला वो जो टाइम कैप्चर हुआ था, दैट इज अ ट्रेड टाइम. एंड ट्रेड वैलिडेशन कंपोनेंट्स, रेस्ट ऑफ ऑल द अदर थिंग्स दैट आर रिकॉर्डेड इन योर पर्टिकुलर कंपोनेंट्स. सो बेसिकली ट्रेड वैलिडेशन में आपको ये क्रॉस चेक ही करना है कि वेदर ऑल दिस डिटेल्स आर परफेक्टली मैच्ड और नॉट. अगर मैचिंग नहीं होता है, प्लीज रेज द फ्लैग. फ्लैग का मतलब देयर इज एन एरर इन द ट्रांजैक्शन, सेंड इट टू द अपवर्ड जो भी आपके डिपार्टमेंट में होगा, एस्केलेशन जिसको बोलते हैं, एस्केलेशन लेवल 1, लेवल 2, वो सब मेंशन्ड होगा एंड यू हैव टू इन्फॉर्म देम. तब तक के लिए या तो ट्रांजैक्शन होल्ड पे रहेगा या तो फिर ट्रांजैक्शन कैंसिल होगा. क्लियर? ओके. नो, मिडल एंड बैक ऑफिस. फ्रंट ऑफिस में तो आप यू आर डायरेक्टली डीलिंग विद द क्लाइंट्स ओनली. Trade validation components, quantity and security. So quantity में क्या आता है? It cannot be less than the minimum denomination of the bond. See sometimes bond में जैसे वो lot size की तरह है, options की. Options में lot size बैंक निफ्टी का कितना था?
25, निफ्टी का 50, बाकी सबका तो अलग अलग है, ठीक है, बाकी स्टॉक्स का तो अलग अलग है। हाईएस्ट हमने किसका देखा था, हाईएस्ट लॉट साइज आइडिया कितना, 70,000, ठीक है। तो ये सब चीजें थोड़ा याद रखना पड़ेगा, थोड़ा लॉट साइज कैसे है, ये एनएससी की वेबसाइट पे ही मिल जाएगा, जस्ट सर्च लॉट साइज ऑफ द ऑप्शंस फॉर ऑल द स्टॉक्स, लिस्ट का पीडीएफ ही आ जाएगा या एक्सेल आ जाएगा आपको, ठीक है। तो सिमिलरली यू कैन नॉट बाय अ मिनिमम डिनोमिनेशन ऑफ द बॉन्ड, मतलब मैं ये नहीं बोल सकता सिर्फ मुझे 20 क्वांटिटी बैंक निफ्टी चाहिए या 15 क्वांटिटी निफ्टी चाहिए, नो, जो लॉट साइज मेंशन्ड है वही आपको लेना पड़ेगा, और या तो इसके मल्टीपल्स ऑफ, मतलब इफ आई वांट टू हैव मोर देन वन लॉट तो 25 का मल्टीपल क्या होगा, 25 के मल्टीपल्स, अच्छा इनको बोला था 50, ओके 50 के मल्टीपल्स, हाँ मल्टीपल्स 50 का मल्टीपल क्या होता है, 100, 150, 200 या क्वांटिटी, या तो 50 का अगर मिनिमम लॉट है, ठीक है, दैट इज अ मिनिमम लॉट साइज यू हैव टू परचेज, आई कैन नॉट परचेज 10 क्वांटिटी 20 क्वांटिटी, ऐसा नहीं, 50 मिनिमम, या तो 50 के मल्टीपल पे, मतलब क्या हुआ, 50 का मल्टीपल क्या होगा वो बताओ सर, 100, 150, 200 या 100, 150, 200, 250, ठीक है। तो बीच की कोई क्वांटिटीज नहीं आएगी, या तो 50 होगा या तो 100 होगा या 150 होगा, आई कैन नॉट से कि मुझे 10 चाहिए, 15 चाहिए या 45 चाहिए या 35 चाहिए, बीच वाला कोई भी नहीं आएगा, सो दैट मींस इट शुड बी द मल्टीपल्स ऑफ द मिनिमम डिनोमिनेशन ऑफ अ बॉन्ड, ओके। It is normally in multiples of the odd lot on an equity, maybe odd lot on an equity, ठीक है, वो कोई मैटर नहीं करता, the lot size will be mattering, but generally अभी क्या होता है, already it is mentioned yesterday also बैंक निफ्टी में 25, if you remember the lot size was mentioned in the contract note, ठीक है, तो वहां पे वो 25 की मल्टीपल्स पे आएंगे, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, okay, and yes there is one more thing, पहले maximum lot that I can execute at a time in Bank Nifty was 2500, मतलब एट अ टाइम अगर मुझे एक सिंगल शॉट में मुझे अगर कुछ खरीदना था तो 2500 था, अब वो 1250 हो गया, ठीक है, बट यू कैन अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल देन रिक्वायर्ड, 2500 लॉट्स दैट इज द क्वांटिटीज मल्टीप्लाई विद द प्राइस, अगर 100 रुपए भी चल रहा है तो कम से कम 2.5 लाख रुपए चाहिए, ओके, प्लस और माइनस 1 रुपीज, 2500 का लॉस का टेबल चालू हो जाएगा, ठीक है, ओके। सिक्योरिटीज, इट कैन नॉट बी अ मैच्योर्ड बॉन्ड, ऑफ कोर्स मैच्योरिटी वाला बॉन्ड तो आप खरीद नहीं सकते हो, इट हैज टू बी बिलो द मैच्योरिटी डेट, कैन नॉट बी एन एक्सपायर्ड वारंट्स, सो वारंट्स इज अनदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड, सिमिलर वर्किंग टू अ बॉन्ड बट एक्सपायर्ड वारंट नहीं होना चाहिए, एंड इट शुड बी क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम एनी अदर सिक्योरिटी, मतलब इफ इट इज अ इक्विटी यू नीड टू मेंशन द क्लास, एसेट क्लास, और इफ इट इज अ बॉन्ड्स यू नीड टू मेंशन द एसेट क्लास, ठीक है। Then comes your price and counterparty. So price must be expressed according to the security group. The share price must be an amount per share. Okay, जैसे हमने Change the slide. Okay, just a minute. Visible now? Yes. Okay. Yes. Okay, so the price must be expressed according to the security group. Security group मतलब अगर bonds है तो उसका fixed price रहेगा, अगर equity है तो volatile रहेगा. Share price has to be the amount per share. वहाँ पे exact total बाद में लिखना है, लेकिन पहले क्या लिखना है, 2500 rupees of the Reliance shares. Bond price must be either a percentage relevant to the face value or a yield. तो आपका जो face value of the bond है 1000 rupees के calculations हमने जब किए थे, या 1500 जो भी face value है, you have to mention that. Counterparties name, email, phone number, address, details, अगर अलग country है तो वो सब details, everything has to be mentioned over there, ठीक है। Trade validation factors में और क्या आएगा, the price must be quantity into price plus or minus the other costs such as stamp duty where relevant. So whenever you are buying the equity, तो कल हमने पूरा bifurcation देखा था, right, कि 555 का profit तो हो गया, लेकिन तो 3-4 अलग अलग चार्जेस के हिसाब से फिर मेरा नेट प्रॉफिट सिर्फ 505 रुपए ही बचा था, ठीक है। तो ऑल दोस पर्टिकुलर थिंग्स यू हैव टू क्रॉस चेक, स्टैम्प ड्यूटी सही लगा है, या तो फिर द प्राइस ऑफ द जीएसटी वेदर इट इज परफेक्टली एलिजिबल और नॉट, मतलब गलती से 12% नहीं डाल दिया है, गलती से 18% नहीं डाल दिया है, ठीक है, क्योंकि समटाइम्स व्हेनेवर यू आर वर्किंग इन इंटरनल सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म तो यू हैव टू मैन्युअली सिलेक्ट,
कि जीएसटी एप्लीकेबल इज 5%, 12%, 18% या जो भी है, ठीक है. accrued days must be relevant to the last coupon payment date and the value date. That is, accrued days का जो calculation है from the starting date to the end date should be perfectly calculated. Plus or minus 1 to 2 days या फिर वहां पे कोई गलती से error कर दिया तो वो नहीं चलेगा. Accrued interest must be relevant to the quantity, accrued days, coupon rate and annual divisor. Annual divisor is your annual divisor क्या आएगा? हाँ क्या? सर DCC. हाँ सही जा रहे थे. और हाँ तो annual divisor मतलब that the whichever the number of days that you are dividing by, either 360 or 365. Actual में तो already 365 है, तो there is no need to change it. Okay. Okay. Trade validation against that comes under this is trade due to settle on free of payment basis, trade with a cash value, trade with a specific counterparty, or trading in a specific market or security group. So trade validation, say for example, whenever we are talking of free of payment basis, so वहाँ पे extreme caution needs to be taken when settling the trades on free of payment basis. Why? Because for example, to deliver the securities to the counterparty prior to the receipt of their payment or cash from the counterparty, all such trades either can be held for validation. जब तक client का payment नहीं आता है, you have to keep that transaction on hold. Do not execute the trade. When a trade settlement and trade reconciliation both will be go for toss. Amount settle नहीं होगा, amount reconciliation में भी नहीं जाएगा, तो error आता रहेगा. ठीक है. और दिक्कत वहां पे आएगा जब वो क्लाइंट पेमेंट नहीं करेगा और ट्रांजैक्शन लॉस में जा रहा है. तो कैपिटल किसका इन्वेस्ट हुआ? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का. पैसा किसका लॉस हुआ? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का. वो इज रिस्पॉन्सिबल. यू. फिर आपको डायरेक्टली ना बोल दे सैलरी डेबिट हाँ इस महीने का, ठीक है, और अमाउंट इतना होगा कि 6 महीने का डेबिट ना हो जाए. ठीक है. So that things have to be taken care of. Then trades with a cash value. In order for the STO, that is your Security Transaction Office, to give specific focus to all the trades, it deems to be larger than the average size. All the trades with a net settlement value of a figure or greater the currency can be done. Cash value या तो currency mention has to be done. Only check वहाँ पे एक ही है. Specific counterparty. So specific counterparty मतलब see कभी-कभी ये चीज भी हो सकता है. Yesterday हमने discuss किया था. A same counterparty might be dealing from US also and from UK also. The only thing अब आपका प्रॉब्लम कहाँ पे स्टार्ट होगा? गलती से जो यूएस का ट्रांजैक्शन था वो आपने डाल दिया यूके के अकाउंट पे, और यूके का कुछ ट्रांजैक्शन था वो डाल दिया आपने यूएस के अकाउंट में. डिस्पाइट द फैक्ट द फाइनल अमाउंट वाज सेम. इट कैन ऐसे कोइंसिडेंस हो सकते हैं कि 2.5 लाख रुपए दोनों जगह पे फाइनल अमाउंट इज सेटलिंग इज करेक्ट, बट द सिक्योरिटी एंड दैट सिक्योरिटी प्राइस विल बी डिफरेंट. इवन द करेंसी विल बी डिफरेंट. ठीक है. तो ये चीज का ध्यान रखना है वहां पे. ट्रेड्स इन अ स्पेसिफिक मार्केट और सिक्योरिटी ग्रुप. सो सिक्योरिटी ग्रुप तो आपको ऑलरेडी मेंशन किया जाएगा, या तो इक्विटी होगा या तो बॉन्ड्स होगा या तो फॉरेन एक्सचेंज, मतलब आपका फॉरेक्स. 3 में से या तो लास्ट में आता है स्वैप, लेकिन स्वैप के लिए डायरेक्टली आई डोंट थिंक कि आपको डायरेक्टली वहां पे आपको भेजा जाएगा, बिकॉज स्वैप इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शन और आपका थोड़ा वो एक्सपीरियंस लेवल भी चाहिए. तो इवन इफ यू आर डीलिंग विद, तो आप तब तक के लिए 3 सिक्योरिटीज में डील करोगे, या तो इक्विटी, या तो कैश मतलब अपना कैश ग्रुप्स, या तो डेरिवेटिव्स और ऑप्शंस, या तो फिर फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस. The only thing will be changing will be the different global market scenarios, either the London Stock Exchange या Nasdaq या तो फिर जापान के निक्के या जो कुछ भी है. ठीक है. Trades which are due to settle at a specific custodian. तो स्पेसिफिक कस्टोडियन मतलब अगर आप यूके में ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो यूके का कस्टोडियन अलग होगा. यूएस में ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो यूएस का कस्टोडियन अलग होगा. प्लीज मेक श्योर दैट यू आर डीलिंग विद द परफेक्ट और द राइट कस्टोडियन. एक्यूरेसी या करेक्टनेस वो सब होना चाहिए. चेक्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू. चेक्स मतलब दैट इज फॉर एग्जांपल चेक मनी होगा कि कस्टोडियन का नंबर ये है, कस्टोडियन का अकाउंट नंबर ये है, कस्टोडियन की डिटेल्स ये है, वेदर दे आर करेक्टली मैच्ड और नॉट. अगर नहीं मैच करता है तो यू कैन होल्ड फॉर द ट्रांजैक्शन. ओके. ट्रेड प्राइस इज आउटसाइड ऑफ द मार्केट प्राइस. नाउ समटाइम्स इट माइट हैपन आइदर ड्यू टू द ह्यूमन एरर और ऑटोमेशन एरर कि मार्केट प्राइस गलती से 2500 की जगह चल गया. रिलायंस का भाव हो गया है 25,000 सिस्टम में,
and system is now not allowing you to modify the price. Why? Because entry किसी और ने किया हुआ है, आपके पास तो सिर्फ ट्रेड नोट का वो कैप्चर ही आया हुआ है. कैप्चर इज मोर ऑफ लाइक अ फोटोग्राफ ऑफ दैट नोट. ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, आप चेंज नहीं कर पाते हो. अब रिलायंस का शेयर पॉसिबल ही नहीं है कि 25,000 तक जा सकता है अभी के लिए, एज ऑफ नाउ 2500 है तो फिर भी ठीक है. तो अगेन द ट्रांजेक्शन विल कम टू अ पॉइंट. Trading in a specific trading book. So basically a trade book will be provided where you need to correctly enter all the details as mentioned. आपका trade date हो, value date हो, trade time हो, security group हो, price हो, quantity हो, net amount. वो सब details check करने के बाद ही आपको trade execution के लिए भेजना है. तब तक के लिए settle मत करना. Clear? Trading with the trade date in the past, sometimes it might create challenges for you. So any new trade which has a trade date in the past may be held for validation. For example, equities entitled to income is governed by the trade date. So मतलब क्या हुआ कि बोला था कि 18th जून को ट्रेड डेट है आपका, ठीक है, और आपने गलती से वहां पे 16th जून एंटर कर दिया है. तो उस टाइम पे कोई तो whichever you are dealing with, prices will be having a fluctuating nature and hence the prices will be different. Clear? Last में trades with the value date in the past. So any new trade with a value date in the past should be held for validation just because the dates or the prices can get changed. 18 जून का मेरा ट्रेड डेट था, वैल्यू डेट था 25 जून को. तो 25 जून को एक्चुअली मुझे बाइंग करना था और मैंने बाइंग किया 27 जून को. या तो 25 जून को बाई कर दिया है, एंट्री कर दिया है सिस्टम में 27 जून का. दोनों एरर्स विल बी पॉसिबल. क्लियर? मोर थियोरेटिकल, आई कैन अंडरस्टैंड, बोरिंग है, ठीक है, घर पे जाके भी पढ़ सकते हो, बट देयर इज नो ऑप्शन फॉर ट्रेड लाइफ साइकिल. ठीक है, ये सिर्फ आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या करना है यही आपको अवेयर करेगा. ठीक है, एट द एंड ऑफ डे एक ही चीज चेक करना है, ट्रेड वैलिडेशन. लेकिन कौन सा वैलिडेशन आएगा, कहाँ पे आएगा, कौन सी सिक्योरिटी का आएगा, यू माइट नेवर नो. I can understand सब बैचेस में लेवल 2 इज वेरी बोरिंग. ठीक है, नॉट ओनली फॉर यू. ठीक है, बट कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे आपके पास. ठीक है, जितना भी प्रैक्टिकल था वो पहले हो गया, म्यूचुअल फंड चला गया, कंसिलिएशन, हाँ तो वो सब हो गया. तो इसमें और कुछ बचा नहीं है. इवन इन रिकंसिलिएशन एंड दिस कोलैटरल आल्सो, मतलब मुझे भी थोड़ा वो चैलेंज लगता है कि आपको क्या एग्जैक्टली समझाना है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो व्हाट इज कोलैटरल, व्हाट इज रिकंसिलिएशंस, राइट. बट आपका जो रिकंसिलिएशन यहाँ पे होगा बेसिकली दैट विल बी फ्रॉम द स्टॉक्स या तो अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पर्सपेक्टिव एंड नॉट फ्रॉम द अकाउंट्स पर्सपेक्टिव. अमाउंट सेटल होगा वो ठीक है, लेकिन ये भी तो चेक करना है ना कि कौन सी सिक्योरिटी या कौन सी आपका जो भी डिटेल्स है वो एडजस्ट हो गया है कि नहीं हुआ है. ठीक है, आपका सीवी वाला वो नहीं हुआ है ना. ओके, नेक्स्ट संडे आई थिंक वी कैन प्लान फॉर दैट वन सॉफ्ट स्किल सेशन, कि वो थोड़ा जल्दी हो जाए आपके लिए तो बेटर है. और प्रेजेंटेशन का भी नहीं हुआ है ना कोई, डोमेन प्रेजेंटेशन या ऐसा कुछ. आईपीओ आपने कर लिया, सबने प्रिपेयर. पीपीटी, ओके. सो दैट वी कैन डू इन लेवल 3 टाइम, बिकॉज आपका वो पेंडिंग है तो उस टाइम पे कर लेंगे. ओके, नाउ मेथड्स ऑफ ट्रेड वैलिडेशन, manual and automated. Just write down the names of the two types of trade validation. अभी सैलरी नहीं आई है. हेलो सर. या जो ये ओकेजनल ह्यूमन एरर्स होते हैं और जो ऑटोमेटेड ट्रेड एग्जीक्यूशन होता है, तो वो चीज है क्रॉस चेक करने के लिए भी रिकंसिलेशन होता है ना? नहीं, रिकंसिलेशन तो बहुत एंड में आएगा. पहले
इसके बाद सेटलमेंट आएगा। सेटलमेंट, अच्छा। The settlement is more of like you are making the final entry in your trade book. Yes. और सेटलमेंट मतलब after everything is done, then reconciliation will come into picture. Yeah, because see, there will be no one transaction getting executed. Say for example, there will be 10 transactions per day, right? So Yes. अगर हम 15 दिन का मान के चलते हैं तो 150 ट्रांजेक्शंस हैं, तो 150 ट्रांजेक्शंस का सेटलमेंट तो हो गया, चलो अमाउंट के हिसाब से या जो भी सिक्योरिटी के हिसाब से करना था। फिर रिकंसिलिएशन आता है 15 दिन के बाद। इफ वी आर एज्यूमिंग कि फोर्टनाइट बेसिस पे रिकंसिलिएशन होता है। Yes. Okay. Yeah, so what is manual trade validation? So manually you are doing a cross check audit, किसी ने किया हुआ है? Anyone? आपका इंटर्नशिप आर्टिकलशिप कहीं पे नहीं आता है ना, सीएस में तो ऐसा कुछ आता है? अच्छा, वो स्टेज नहीं आया फिर। या आपने किया है? अच्छा, एग्जीक्यूटिव में छोड़ दिया। ओके, तो बेसिकली अगर किसी को बैठे है आर्टिकलशिप के लिए, तो पेंसिल लेकर वो एक बुक लेकर, ठीक है, पूरा अकाउंट स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे होगा और उनका अकाउंट स्टेटमेंट यहाँ पे होगा, एवरी डिटेल विल बी चेक्ड। तो दैट इज अ मैनुअल वे ऑफ एक्चुअली चेकिंग एवरी। हाँ, या किसने किया है? सर सीए के इधर किया है। अच्छा, ओके। या सो दैट इज द ओनली वे थ्रू व्हिच यू कैन मैन्युअली चेक। और प्रॉब्लम तभी आती है वो जब 10 रुपए 20 रुपए नहीं मिल रहे होते हैं ना, तो पूरा एंट्री से लेकर एंट्री प्रोसेस है वो 20 रुपए के लिए, ठीक है। सो दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट। Okay. In automated trade, basically, there will be already systems at place through which you will be able to correct the data. तो जैसे मैंने आपको कल वो SQL का जो बोला था, SQL का, वहां पे कैसे होता है, you can just insert that if condition and write the condition that say for example the cell 1 जो एक्सेल में जैसे हम बोलते हैं cell 1 value is equal to value of cell 2 से for example, अगर दोनों का सेम है तो कंडीशन में yes लिख के आ जाएगा, अगर नहीं है तो no लिखेगा वो, ठीक है। तो सिमिलर statements or conditions can be inserted through SQL or through already built up such automated systems of the organization, तो आपका वो टाइम बच जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है।
So जैसे वो execute होता है तो that all the records of the table, so say for example there are 50 records in the table, जहाँ पे भी 3 या 4 में कुछ गलतियां है या कुछ भी है, तो you will be directly getting the transaction reference numbers and then you can cross check कि अच्छा ये transaction 4 transaction है जहाँ पे कुछ ना कुछ तो डेटा मिसमैच हो रहा है, या क्वांटिटी या प्राइस या वैल्यू या डेट या उसका करेंसी जो भी है, तो देन यू विल बी रिक्वायर्ड टू मैन्युअली। ओके, सो दिस इज ट्रेड कैप्चर, यहाँ पे हुआ ट्रेड एनरिचमेंट इफ रिक्वायर्ड। अगर ट्रेड एनरिचमेंट के बाद आता है ट्रेड वैलिडेशन। एनरिचमेंट मतलब एडिशनल डेटा दैट यू विल रिक्वायर टू कंप्लीट द ट्रेड नोट। उसके बाद आता है ट्रेड वैलिडेशन। अगर ट्रेड वैलिडेशन फेल होता है तो एक्सेप्शन जनरेट होता है। एक्सेप्शन इज अ फ्लैग that I was talking about. Flag is an error that you are generating and asking your supervisor to solve that particular query, और टीम लीडर जो भी है अंदर कंपनी में, ठीक है। अगर ट्रेड वैलिडेशन सही है तो एग्जीक्यूट होकर ट्रेड एग्रीमेंट में चला जाएगा। दैट मींस यू आर कंफर्मिंग योर क्लाइंट कि यस वी आर कंफर्मिंग दिस ट्रेड, वी आर एग्रीइंग ऑन द ट्रांजैक्शन एंड सो फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन प्लीज आइदर सेटल द अमाउंट, मतलब या अमाउंट भेज दो अगर पेंडिंग, अगर नहीं है तो वी आर डेबिटिंग योर अमाउंट एंड क्रेडिटिंग द शेयर्स। लास्ट में आ जाएगा रिपोर्ट में, तो रिपोर्ट में वो एंट्री जर्नल एंट्री आ जाएगा डेबिट क्रेडिट का, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई एक्सटर्नल प्राइसेस आपको डेटा फेच करना है, से फॉर एग्जांपल फॉरेक्स का करंट मार्केट प्राइसेस या वैलिडेशन रूल्स एनी फ्रॉम द सेबी या सब कुछ अप्लाई करना है, तो यहाँ पे जाके वो क्रॉस चेक करना पड़ेगा whether the given security is being following the norms of this particular transaction or not, or whether the prices that we are fetching are on a real time market basis or not. रियल डेटा है कि ऑलरेडी स्टैटिक डेटा हमने लेके रखा हुआ है। रियल डेटा कैसे होगा? से फॉर एग्जांपल लाइव मार्केट से क्लाइंट बोल देगा कि अभी रिलायंस के 1000 शेयर उठा लो मार्केट से, और स्टैटिक डेटा कैसे होगा? जब 2500 पे आता है तभी जाके एग्जीक्यूट करना। अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड द डायनामिक डेटा? So trade agreement will be achieved through issuance of the outgoing trade confirmation to the counterparty and receipt of the incoming trade confirmation from the counterparty. Trade matching and trade affirmation. So it is more important that you are sending a receipt of the trade agreement कि हाँ सब कुछ सही है, no details are misplaced or no details are missing. All the trade agreement verifications and validations are done, and now we are sending it to the trade settlement और बाद में reporting. Okay. So trade agreement is achieved by the STO communicating the details of each trade to the counterparty, whereupon the counterparty should check the details and revert to the STO if it recognizes the trade, but the details are differ. Say for example prices are differ, वो वापस तब भेजेगा रिसिप्ट उसका कि अगर अगर 2500 हमने उसने गलती से भेज दिया है, ठीक है, हो सकता है ना whenever you are typing 2500 गलती से 2050 टाइप हो गया, बट यू आर नॉट अवेयर और आपने भेज दिया डायरेक्टली नोट, तो वो वापस भेज देगा, ठीक। एग्री एंड सेटलमेंट, it goes hand in hand, so matching of the sellers and the buyers trade details are done. Agreement क्या होगा? So trade agreement will be the agreement of the trade between the securities trading office and the counterparty. Settlement instructions matching the custodians of the buyer and seller attempt to match the settlement instructions prior to the delivery of the securities and payment of cash. So basically agreement जब हो जाता है तब settle तभी होगा जब client के खाते में पैसा जमा होगा, you are debiting it, creating the shares and then sending it for the reporting it. Clear? Now reducing the risk of security trading organization. कैसे risk कम कर सकते हैं? STO is like a investment banker का काम है यहाँ पे। वो STO over here, investment banker मतलब आप लोग, तो आप आपका खुद का रिस्क कैसे कर सकते हो? So for all the executed trades, क्या हुआ? Sir, voice is not clear. For all the executed, hello. So now it's clear. थोड़ा डिस्टॉर्ट हो रहा है बस। Okay.
सो नाउ वाइब्रेशन हो रहा है कहीं पे. Okay. So which are the risk factors to the STO and how it can be reduced? Of course, one of the major challenges for you will be that there should not be an impact on the P&L statement of the client. Profit and loss statement may, just because of our manual errors or any other transaction errors, there should not be an impact on the P&L statement of the client. तो आप उसको कैसे कम कर सकते हो? The trader should execute a trade with a counterparty. So basically, a custodian will be dealing with a custodian. The trader will record the date within the STO's trading system. Once the trade details are finalized, I will be recording all those details in the system so that if tomorrow if client is saying नहीं मैंने 2500 नहीं मैंने तो 2400 आपको बोला था, so I can show him that trade note. See, this is the details and the instructions we had exchanged and that is what we had finalized. तो वो अपनी conditions या कोई भी details के हिसाब से वो मुकर नहीं जाएगा. ठीक है, ऐसा हो सकता है कभी-कभी. Third one, the trade has also been captured within the STO's settlement system. So the once the entire trade is executed, that needs to be settled again into your system. मैंने trade execute कर लिया 2500 के भाव पे 1000 quantity of Reliance shares खरीद लिए. Now that particular thing has to be settled internally in your system. तब जाके वो आपके accounts department में उसका credit note जाएगा. ठीक है? And the trade has been validated. So validated, of course, it will come only, and then verification will be done. So what are different trade agreement methods? The issuance of outgoing trade confirmation to the counterparty. So you are informing and confirming the counterparty, yes, I have received your details that 1000 shares of Reliance will be executed at a price of 2500. It is highly that an STO will be required to issue a trade confirmation to the clients, particularly when a trade affirmation facility is not used. So basically generally वो confirm कर ही देता है. जैसे ट्रेड एग्जीक्यूट होता है तो जैसे कैसे जीरोधा ने मुझे कल मेल भेज दिया क्या चाहिए आपका ट्रेड था आपने कर लिया है, automatically the email will be sent to the client whenever the trades are executed. Okay. Last one, it is likely that an STO will want to issue a trade confirmation to other STOs with which it is trading, particularly where a trade matching facility is not used. So STO will need to confirm the trade only in the case if there are any mismatches occurring related to trade confirmations. So trade confirmation details which are exchanged between this custodian and another custodian, वहां पे अगर mismatch आता है तो उस टाइम पे ट्रेड एग्रीमेंट के लिए रुकना पड़ेगा. ओके. सेकंड मेथड इज रिसीट ऑफ इनकमिंग ट्रेड कंफर्मेशन फ्रॉम द काउंटर पार्टीज. तो वंस यू ट्रेड एग्रीमेंट का नोट आपने भेज दिया तो काउंटर का नोटिफिकेशन आता है, यस प्लीज कंफर्म द ट्रेड एंड प्लीज प्रोसीड ऑन टू द एग्जीक्यूशन पोर्शन. ठीक है, तो इट इज वेरी हो गया, एग्जीक्यूशन भी हो गया तो ट्रेड एग्जीक्यूशन नोट ऑटोमेटिकली चला जाएगा दोनों एंड से. मैंने भेज दिया तो उसे बोलेगा यस आई हैव रिसीव्ड द कंफर्मेशन एंड प्लीज प्रोसीड फॉर द ट्रेड रिपोर्टिंग. सेटल भी तो करना है ना लास्ट में, एग्जीक्यूट करने के बाद, एग्जीक्यूशन के बाद आता है सेटलमेंट, सेटलमेंट के बाद आता है रिकंसिलिएशन. थर्ड मेथड इज ट्रेड मैचिंग. So trade matching is basically the term which is normally used when referring to the mandatory electronic matching of the trade details. So which are trade details? You have already written all the particular components of the trade details. All those details have to be confirmed at this juncture. And the parties to the trade are required to import the details to a central trade matching facility. Central trade matching facility matlab if there is a centralized database management system between both the custodians, you need to cross check and verify it. Okay? Trade affirmation will relate to the optional electronic matching of the trade details between the STO and institutional clients. So basically यहाँ पे trade affirmation कैसे होगा? Electronic matching. Electronic matching is either through the SQL method or through any other internal system such as SAP. तो SAP का भी example मैंने आपको कल दिया था, right? If you remember that one or two modules will be there. Okay. Once this gets completed, I will show that one image that I am having. एक ही image है SAP का, वो भी marketing perspective से है, but you will get a fair bit of idea कि आपका finance या जो
स्टेटमेंट है उसका इमेज भी मोर और लेस सेम होएगा unless and until there is internal changes IT will be at the back end. Okay, now outgoing trade confirmation. Most of voice distort हो रहा है most of the वॉइस डिस्टॉर्ट हो रहा है. yes अभी भी हो रहा है क्या? अभी नहीं हो रहा है पहले. Okay. ठीक है. Outgoing trade confirmation. So trade confirmation is a formal statement of all the terms of a transaction issued by that security transaction office to its counterparty, whether an institutional client or other STO. What all details the need to issue trade confirmation? The content of the trade confirmation should be accurate and correct. The method of transmission, of course, will be electronically. अब तो मैनुअल होगा नहीं. The number of copies required. Number of copies किस चीज के लिए? कस्टोडियन को एक कॉपी चाहिए, डिपॉजिटरी को एक चाहिए, क्लाइंट को एक चाहिए, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को एक चाहिए. ठीक है. Language in which the confirmation will be done. Now see, it's not always mandatory कि communication English to English language में ही होगा. It can be English to Spanish, English to other supporting members in your team who will be doing all these transactions.
प्रोजेक्टर इज टर्न्ड ऑफ, वो चालू करो। एक और बार नहीं, वेट। So we were discussing about the outgoing trade confirmations, okay? The language in which the confirmation has to be done and the automation of the outgoing trade confirmation. So basically आपका जो trade confirmation note है कुछ इस तरह से दिखेगा. From मतलब the name of the issuing securities trading office, that is investment, to the name of the STO's counterparty. क्या है relevant person of the department at the counterparty, मतलब अगर उसको reference सर वॉइस लो आ रहा है. वॉइस स्लो आ रहा है. हाँ अभी आ रहा है क्लियर कि अभी भी नहीं आ रहा है? क्लियर है बट मतलब ओके ओके हाँ है. Subject heading that states the message purpose. So say for example, if I want to send a trade confirmation email to the counterparty stating कि आपका trade agreement हो गया है, trade confirmation भी हो गया है, we are now moving towards trade execution, trade settlement and trade reconciliations. Operation will be of course mentioned, buying हुआ है या selling हुआ है. So say for example, we are buying 1000 shares of Reliance will be mentioned over here. The trade date will be on 25th June and the timing, say for example, at the opening time of the market, say 9:15 a.m. Okay, price will be 2500 because we are already waiting for the price to come at 2500. Sign off is more or like the name and the location of the office. तो yesterday वो अगर जो मेरा जो नोट था उसमें Zerodha का नाम और ऑफिस, उसका GST नंबर सब कुछ मेंशन था. So that is how that Zerodha is acting as an STO for me. I am the counterparty. Okay. So what are the different transmission methods? पुराने जमाने में फैक्स भेजा जाता था. Second, telex is an international मतलब services. Third one is Swift. So just write down one assignment. What is Swift? SWIFT. But international level. Anyone has carried out so far any international transactions? मतलब आपको डॉलर में पेमेंट कहीं से आया हो? हाँ, रेमिटेंस में होगा. रेमिटेंस में स्विफ्ट ही होगा. And that is now replaced by this blockchain technology. मतलब बिटकॉइन तो ठीक है, वो अलग बात है. But the technology which is used for an efficient transfer, efficient मतलब 3 सेकंड 2 सेकंड में अभी जस्ट क्लिक किया और आ गया. जैसे आप IMPS यूज करते हो तो that is the fastest way of sending the payment rather than doing NEFT RTGS, right? But compared to Swift also, why this particular technologies are used? Because without the interference of the banks, which is a third party, right? बैंक को क्यों बीच में रखे? अगर मुझे आपको कुछ पेमेंट भेजना है तो मैं डायरेक्टली आपके अकाउंट में भेज देता हूँ. Why should I need a bank or banking system? इसलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से डेवलप हुआ क्रिप्टो करेंसीज. ओके, जो अभी बेहाल है. इफ एनीवन हैज अच्छा लिया हुआ है किसी ने कुछ? आई होप नो. प्लीज अवॉइड आल्सो. ओके, यू शुड ऑलवेज बाय सच फाइनेंशियल एसेट्स दैट इज सम अंडरलाइंग वैल्यूज. ठीक है, rather than मतलब जिसकी अंडरलाइंग वैल्यू ही पता नहीं है. बिटकॉइन किसके ऊपर बेसिस है वो किसी को पता नहीं है. नो रेगुलेशंस. 24 घंटे इसलिए चलता रहता है ना, नो छुट्टी, सैटरडे संडे भी ऑन मार्केट्स. और नो अपर सर्किट नो लोअर सर्किट. जितना ऊपर जाना है ऊपर खींच लो, जितना नीचे ले जाना नीचे ले लो. 60,000 था समथिंग बिटकॉइन, नाउ $19,000. 40,000 का ऐसे ही साफ हो गया डॉलर्स अगेन. वी कैन एस्टिमेट द लॉस दैट पीपल आर मेकिंग नाउअडेज. इसलिए तो फाइल हुआ ना केस इसके अगेंस्ट में एलन मस्क, $258 मिलियन का. ठीक है, डिफेमेशन केस, जस्ट बिकॉज ही वाज इन्वॉल्वड इन दैट डॉजकॉइन वाला. वो एक मेम पोस्ट करता था दैट इंक्लूडेड दैट डॉग वाला थिंग.
ठीक है, द डॉजकॉइन वाज अनदर क्रिप्टो, वो $1 से कुछ खींच के लेके गए थे $15 तक या 25, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वैल्यू। तो $1 मतलब कितना हुआ, 60-70 रुपीज, 70 रुपीज मान के चलो, 80 ले लो, और $25 इज हाउ मच। तो दैट इज हाउ यू मैनिपुलेटेड, या जो कुछ भी वो पता नहीं है, बट हुआ है वो श्योर है। ओके, so according to the counterparty's preference, the selection of the transmission media will be done. So counterparty बोलेगा नहीं मुझे स्विफ्ट नहीं, आप मुझे ईमेल भेज दो या फिर पेपर में टेलीग्राम भेज दो या कुछ भी कर दो। Issuance of one or many copies and languages, that is a different thing, but you need to make sure that how or how many types of different transmission methods are there. Okay, now there is a TRAX mechanism being used. ISMA is an organization based in Zurich, where it is a self-regulatory organization, and trade association is responsible for the regulation and enforcing the rules for the functioning of the international securities market. So international securities का जब डील होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंडर में, तो ISMA will be coming into the picture. They have basically introduced this TRAX system as a means of addressing all the issues of the trade confirmation transformation जो भी है, ठीक है। So TRAX is a real-time trade matching mechanism covering all the international traded debt and equity securities. So whenever I need to have a real-time data of any security, I will be fetching that data from which source? From TRAX. So TRAX has to be installed on my computer system, जहाँ मुझे real-time data का मुझे डेटा मिल जाएगा, जैसे हमने को वो investing.com से मिलता है, if anyone knows that. ट्रेडिंग व्यू आपको शायद बताया था मैंने, वो टेक्निकल एनालिसिस चार्ट्स के लिए ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड investing.com is another source from where you can get the real time data of all the securities across the world. जितना भी मतलब सिक्योरिटीज होगा वो आपको डेटा वहां से मिल जाएगा, वेदर ऑफ इक्विटी मार्केट्स और वेदर ऑफ डेट मार्केट्स। ओके, ISMA members are required to issue a message to TRAX so as to receive or retrieve the data within the 30 minutes of the trade execution. If the message is not received by TRAX within the 30-minute deadline, a fine will be imposed. That is fine, not necessary. So STO will execute a trade with a counterparty, both of which must be ISMA members. Okay, both the parties will need to send the trade details to the TRAX to be received by the TRAX within the 30-minute deadline. मतलब ये आपका STO, ये रहा counterparty. TRAX will be working in between both of them. ये send trade details और send trade details, transmit the required data at both the ends, buying and selling जो भी हो रहा है, ठीक है, रियल टाइम में. The TRAX system will search for a match and then apply the status. मतलब अगर ये बोल रहे हैं मुझे 1000 quantities of Reliance at a price of 2500 चाहिए, तो उसको ये नहीं पता कि काउंटर पार्टी कौन है, लेकिन ट्रैक्स में वो डेटा होगा कि हाँ 2500 के भाव पे कोई खड़ा है सेलर, who is actually willing to sell 1000 quantities of Reliance. Then TRAX will be sending the details to the buyer, which is a STO in this case, and counterparty का trade execute हो जाएगा, ठीक है, because he is a seller. समझ में आया कि नहीं है? Counterparty is working as a seller, STO is working as a buyer. Both of them are having their data sets. मतलब STO ने बोला मुझे बाय करना है रिलायंस का 1000 क्वांटिटी ऑफ शेयर्स बट एट अ प्राइस ऑफ 2500. उस टाइम पे एक्चुअली प्राइस चल रहा था सिर्फ फॉर एग्जांपल 2520, फिर धीरे धीरे जाके जब नीचे आया तो 2500 पे नॉट ओनली 1000 सेलर्स बट देयर कुड बी नियरली 50,000 sellers available. तो the first seller who is in the queue, he will be allowed to sell his 1000 quantity shares and data will be executed by TRAX in this method. Clear? नहीं, TRAX का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो TRAX की डिटेल्स will be received by the custodian of this STO. वो रेफरेंस नंबर, ट्रांजैक्शन डिटेल्स, वो डिटेल्स वो TRAX से ही ऑब्टेन होगी, क्योंकि डेटा आपका प्राइस का तो TRAX से ही जा रहा है ना, कोई दूसरा एक्सचेंज तो है नहीं, यहाँ पे BSE इज नॉट देयर, NSE नहीं है, Nasdaq नहीं है, तो डेटा कहाँ से आ रहा है? Okay. The current trade status is then made available to each of the parties involved. So basically, whether it is executed or not, that will be confirmed. Now we can take a break. Last two topics are remaining of trade life cycle: transaction reporting, settlement, and executions. Okay, and then your TLC is completed. और कुछ pending नहीं है. Then Saturday we can go with collateral and stock borrow lending. वो खत्म कर लेंगे, तो फिर सिर्फ आपका रेफरेंस डेटा मैनेजमेंट रहेगा. I think एक ही टॉपिक बचा है फिर. Then one revision session and then your mocks for level 2.
settlement, yes. And वही बचा. Okay, online students, we are taking a break and we will reconnect then. Okay, sir.
Okay, let's start transaction reporting. Okay. Within each marketplace, a regulatory environment has to exist in order to ensure that the market operates in a fair and orderly manner. Okay. This encompasses a number of facts of operations related. Yeah. So your screen. Okay. Is it visible now? Yes, sir. Okay. So basically, as a part of this particular SEBI instructions, it is mandatory for all the STO offices or STO organizations to report the transactions. So जितने भी details वगैरह जो कुछ भी रहेंगे, so that is mandatory that they need to follow it. So say for example, starting with the transaction reporting. So every client, अगर आप कभी भी आपका जो that PAN card number and Aadhaar card number डालते हो, a list of all the transactions will be coming out. कि आपने कितना buy किया, कितना sell किया पूरे साल में, ठीक है? In a given financial year, I'm talking about. Even your NSDL statement will be showing all those particular details. So they are mandatorily to be reported to the concerned authorities. Why? Just to avoid any of the fraudulent transactions. Yesterday हमने वो एक example देखा था, 9 transactions, 10,000 rupees each. 10th transaction पे 10 लाख रुपए की एंट्री है, तो अचानक से 10,000 से डायरेक्टली 10 लाख कैसे हो गया? That you have to inspect. Okay. Trading rule breaches, if either of the custodian or any of the counterparties or any of that particular clients are breaching this particular rules, it is important that as an investment banker, you have to report that particular incident part of your financial fraud. Okay. Position taking disappropriate to the members' financial positions. Rules, regulations are set up by the marketplaces, that is basically your regulatory agencies, which are designed to provide an efficient market environment based upon what is the objective: investor protection, interest of the members or the stakeholders of that particular entire entity, and guarding the reputation of the marketplace. Why? Because only then people will have the trust. Otherwise, अगर मैं जीरोधा पे ट्रेड कर रहा हूँ लेकिन मुझे NSE या BSE के ऊपर ही भरोसा नहीं है, तो how will I am going to trade? Correct? The purpose of transaction reporting. So following the execution of a trade, stock exchange and market members are normally required to report appropriate regulators the details of all the transactions undertaken within a pre-stated time frame from the time of trade of execution. All the transactions that you are carrying out, prepare the journal or prepare the report, submit it to the concerned authorities. Report of all the details of every transactions undertaken. So this information will allow the regulator to assess and supervise the business being transacted by individual companies within the marketplace. This activity is commonly referred to as supervision or surveillance within the regulatory environment. So basically, just from the regulatory compliance, you can say we are monitoring the transactions whichever are either going for the buying purpose or going for the selling purpose. Any suspicious activities identified, you have to report it. Those who must comply with the transaction reporting requirements are UK-based regulatory firms, including STOs. Transaction reported by the STO may be achieved through different methods. So हर एक कंट्री का अलग अलग रेगुलेटरी कंप्लाइंस होगा, अलग अलग नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस होंगे, अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दे हैव टू फॉलो. सो से फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ऐसा मेंशन किया जाता है कि रिकंसिलिएशन के बाद एवरी मंथ यू हैव टू सबमिट द रिपोर्ट टू द सेबी, तो वहाँ पे ऐसा होगा कि क्वार्टरली होगा या फोर्टनाइट बेसिस होगा या 2 महीने के बाद होगा. ठीक है. The method and mode of transaction reporting will be different. The format and the structure of the report will be different. So all those things will be coming over here. Eurobonds are opposed to the UK equity. That Eurobonds have been traded under the rules of ISMA. That is fine. Trax is of course used as a mechanism for transaction reporting of the Eurobonds, whereas CRAST is used for transaction reporting of UK and Irish equities. But you don't need to remember the names over here. It's not required. Whenever you are migrating yourself to UK and Ireland, तब जाके ये सब थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, unless and until it is not required. ठीक है. Actions following the detection. Now, whenever a regulator detects trading activity that is dubious is suspicious, an investigation begins involving the security of all the transactions executed by the stock exchange members in the specific security. The best example is Harshad Mehta's scam. Okay. This may include the inspection of the exchange and the market members' books and records and interviewing the members' personnel.
सो जिसने भी वो स्कैम देखा हुआ है तो यू मस्ट बी अवेयर कि कैसे उनके हर एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक किए गए थे, हर एक एंट्रीज, ट्रांजैक्शन डिटेल्स, जर्नल्स वे चेक, ठीक है, जो रेड हुआ था 2 बार हुआ था, ठीक है। Then comes finally your settlement instructions. So term settlement instructions refers to describe the mechanism by which trade settlement is initiated between the seller and buyer. So just write down what is settlement instruction, just a definition. What is settlement instruction? Done? Okay. So whenever your trade is validated, verified, and agreed upon with the seller or the buyer, you have to send the trade for the settlement finally, so that the execution can be done between the buyer and the seller. So an STO will issue a settlement instruction to the relevant custodian stating, I am going to execute on 1000 quantity shares of Reliance, which need to be bought at a price of 2500. Okay. The term custodian is used within this book as a generic term for the many types of organizations that provide custodial services. So an IB bank can also work as a custodian. Settlement instructions are normally generated by and transmitted from the STO settlement system by a secure method. Secure method मतलब जैसे अभी that encryption method एक आता है, किसी को अगर पता हो तो encryption details, what are encryption details? Coded form में होगा, हाँ. No one will be able to trace it out, so just to prevent them from cyber attacks. वरना वो पता चल जाता है कितना अमाउंट है, कौन सी क्वांटिटी या कौन सा that particular security is there. The destination being the appropriate custodian to be selected from the range of STO's custodians depending upon the security that needs to be targeted. Now delivery versus, what are the different instruction types? One is delivery versus payment and second one is free of payment. Just write the categories name. We will discuss both. So delivery versus payment is the simultaneous and irreversible exchange of both securities and cash. It is a term which is used throughout the securities industries where the trades are getting settled on this particular basis. Basically क्या होगा, एक हाथ से लो, एक हाथ से दो. Security cash, you are making it payment and you will be getting the securities delivered. But in the free of payment, we have seen earlier, the client will be insisting on, please buy the securities first. I will be making the payment in 2 to 3 days of time. Okay, so when the movement of the securities and cash between the buyer and the seller is disassociated, the settlement is said to be occurring on free of payment basis. It will not occur both the things simultaneously. The payment will come later, but you have to buy the securities earlier. But that is again a risk factor. We have discussed it earlier. If the payment is not coming, then of course there will be a chances of default.
So what are the content of the settlement instructions, or what content is there, from which securities will be received and from whom the payment will be done? That is a transaction note. Who is the buyer, who is the seller, whom the securities are delivered, from whom payment will be, the quantity of the securities, the net settlement value. Now see, the net settlement value will not only comprise of the price of the securities, but also the other charges. Say for example, brokerage or any taxation or any other things. Okay. The earliest date during which the instructions are to be carried out. So say for examples, whenever the instructions, how the instructions have to be carried out, that need to be known. Basically 25th June को करना है, लेकिन 18 June को हमको inform किया जाता है. When cross-border trading and other border settlement begin, custodians were set up by the SCOs in the relevant financial sectors. Communication was more important. Why? Because see, अगर यहाँ पे custodian बैठा है और अगर उसका office कहीं US में नहीं है या UK में नहीं है, तो what is the major challenge? Of course, he has to stay awake in the night and contact with the custodian of that particular other counterparty, right? And this is the reason that all these particular IB banks, which are working as STOs, they are having branches across the world, just to ensure that the transaction processes are done in a convenient way. For transmission of settlement instructions to the international central security depositories, there is a choice. How? Because say for example, SWIFT can be used, proprietary systems, Euclid for Euro-based nations or Euro-based transactions, SETCOM is another one, mail and tested telex. Now see, these are all the different IT mechanisms used for the settlement of the transaction, both the payment as well as the security. ठीक है, तो जैसे ही पेमेंट आता है स्विफ्ट से, डायरेक्टली यू आर इन्फॉर्मिंग थ्रू टेस्टेड टेलेक्स और थ्रू एनी अदर इंटरनल मैकेनिज्म्स दैट दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इज सेटल्ड. ओके, एनी क्वेरीज, एनी डाउट सो फार? So SWIFT has numerous categories of settlement instructions and messages written for different purposes, some of which relate to securities while other are related to cash only payment. So basically instruction mentioned होगा SWIFT का, जैसे आपको कितने का पेमेंट है, कौन सी करेंसी में आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कौन सी बैंक के ब्रांचेस से आ रहा है, all those things and details will be coming over there. CREST is the system which is used in UK and Ireland, and specifically all the instructions will be mentioned from the perspective of the regulatory compliances of UK, not of India, not of any other country. उनका जो भी स्ट्रक्चर या फॉर्मेट होगा वो वही फॉलो करेंगे. यूक्लिड इज फॉर यूरो बेस्ड नेशंस. ठीक है, यूरो में कौन कौन से कंट्रीज आएंगे? यूरो, हाँ, कंट्रीज कौन कौन से? हाँ, यूरोप में कौन सा है? यूएसए. यूएस कहाँ से आ गया भाई यूरोप में? पेरिस, फ्रांस. हाँ, फ्रांस. ओके, देन और कोई? रशिया. नो नो, हाँ रशिया. ओके ठीक है, लेकिन अभी एक्सक्लूडेड है. जर्मनी. जर्मनी, या नो आइडिया. यूरोप के कोई भी कंट्री? ऐसा नहीं सोचो मुझे स्विट्जरलैंड घूमने जाना है, एटलीस्ट वो तो सोचा ही होगा किसी ने. एक कंट्री का नाम तो कॉमन. यूके इज देयर, बट यूके इज नाउ डिफरेंट फ्रॉम यूरोप. ब्रेक्सिट के बाद वो अलग हो गया. स्पेन सर. जर्मनी, पोर्चुगल, स्पेन, फ्रांस. फ्रांस. एटलीस्ट फुटबॉल कोई देखता है तो प्लीज थोड़े बहुत कंट्रीज के नाम याद रखिए. आई थिंक देयर इज वन कैफे इन पुणे जहाँ पे वो फुटबॉल बेस्ड वाला थिंग बना हुआ है ऑफ ऑल द नेशंस. आई डोंट रिमेंबर द नेम राइट नाउ, सर्च कर सकते हो. बट यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट यू नीड टू अंडरस्टैंड that all the European nations are working together on the same currency. वहाँ पे यूरो ही है. And second, all the cross-border settlements are easier over there. Why? Because timings on almost सबके same है, 2-3 घंटे आगे पीछे होंगे. And second thing is there is no visa required. जैसे if I want to migrate to UK or travel to UK, मुझे वीजा चाहिए, ठीक है. लेकिन अगर आप यूके के सिटीजन हो, फ्रांस के सिटीजन हो, तो you don't need a visa. You can directly drive your car and get into another nation. ठीक है. That is one of the major advantages. Import export easy हो जाता है. Trading between the different nations becomes easier. Okay. Last one is the SETCOM. So clear, Luxembourg's proprietary system is the SETCOM, which has a settlement instruction numbering method being used. Numbering is basically all this we will be discussing during the time of that reference data management and ISD identifiers. Basically, it is more of like how you distinguish a transaction coming from Euro, a transaction coming from UK, a transaction coming from Switzerland, a transaction coming from India. How will I know कि कहाँ से कौन सा transaction आ रहा है, despite the fact the client is working across all these nations. Clear? Deadlines for the receipt.
So all the custodians will be mentioning the deadlines by the time after which they will be submitting the settlement instructions, notes, जो भी है, along with all the mentioned details. The method of transmission is mostly likely to be electronic basis only. The deadline normally allows for matching of the instructions. Why? Now see why the deadline will be mentioned. Any guesses? Deadline for the settlement instructions. Why it will be mentioned? Sir, for matching or compare to both data. Yeah, matching compare is there. And second thing is अगर piled up हो गया, ठीक है, और कहीं पे फिर वापस वो ट्रैक करने के लिए जाना पड़ा, गलती से एक ट्रांजेक्शन कुछ मिसमैच हो गया, होल्ड पे है तो हमने मिस आउट कर दिया, so it is mandatory that you connect with the counterparty's custodian and your custodian that please make sure that the settlement has been finalized. ठीक है, वरना 10 दिन के बाद एक एंट्री आता है, एक रिसिप्ट आता है फ्रॉम द क्लाइंट साइड, प्लीज रिलीज दैट माय होल्ड ओवर ट्रांजैक्शन, जो आपने होल्ड पे रखा है, आप भूल गए थे, अच्छा मैंने कोई ट्रांजैक्शन ऐसा होल्ड करके रखा था, सेटलमेंट भेजा ही नहीं था मैंने. क्लियर? Manually generated settlement instructions are nowadays of course not available, but in an automated environment it may be necessary to generate instructions manually. When the custodian receives the manually sent instructions, it will be subject to all the normal settlement instructions events. There will be no connection between settlement instructions and the trade that is carried out. Only that note whichever you are mentioning or stating that is important along with the identifier, that's it. Nothing else is required in your trade settlement. Okay, so this is how your settlement will be carried out. Say for example your computerized exchange is over here, or through telephone or through traditional stock exchange. So OTC and both non-OTC markets are here. STO is present over here. So there is a trading system, there is a settlement system. Settlement always works in the back end. Back end मतलब back office वाला है. And trading is the front office, which is directly dealing with the client. So all the data that will be coming from the trading system has to be sent to the settlement system. They will be passing individually to all the individual custodians of your clients. ठीक है? Transactions तो एक साथ execute हो रहे होंगे. Say for example, your client A, client B, client C. अब सबने बोला मेरा 500 रिलायंस लो, किसी ने बोला 400 रिलायंस लो, किसी ने बोला 200 रिलायंस लो, सबने रिलायंस का एक साथ ट्रांजैक्शंस भेज दिया. How will you distinguish? So there is a need of your trade settlement first of all, mentioning the details of the client, mentioning the details of the quantity, price, trade date, validation, and all those things will be checked. Only and only then it will be finally sent for your execution and reconciliation. Okay. So this basically now ends your trade life cycle chapter. Okay. Doubts, queries come rahega, I can understand, but the only thing is you have to prepare certain selected topics only in the entire chapter of TLC. Okay. Please remember the names of all the stages specifically. Front office, middle office, back office में क्या होता है? SQL का basics कर सकते हो तो will be very good for you. नहीं हो पाता है तो कोई मतलब mandatory नहीं है. But हाँ, once you get the job, I will strongly suggest. ठीक है? बाकी that is fine. Rest of the things इतना important नहीं है. Okay. Any other doubts? SQL classes. SQL के? SQL ना? नहीं हुआ. SQL तो मैं नहीं कर पाऊंगा because not a part of your SIBOP program also. But I can share something if I can find out something. कुछ होगा हो हाँ. But actually क्या है कि वो see SQL के लिए वो that we need that particular software also. जहाँ से डेटा वगैरह मुझे एक्सेस करना पड़ेगा या queries में आपको दिखा सकता हूँ. ठीक है? Yeah, let me show you one thing. That snapshot of that. An SAP, but for the sales perspective, but let us understand from the perspective of finance only. Now see, this is a standard order number 16341. This is your identifier or trade identifier number we can say, or your reference data management number also. Okay, number यहाँ पे आ गया 16341. Can you see? I cannot zoom it further. इतना ही है. Can we do for this?
Okay, sure. So 16341 is your transaction identifier number. Now यहाँ पे sold to party number mentioned है. That means if I'm entering that number, automatically it will be linked to that particular client A only. Client B नहीं होगा, C नहीं होगा, D नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा. उसका number fixed है 101000011. ठीक है. कस्टमर रेफरेंस अगर कुछ लिखना है, मतलब अगर आपको कोई दिस इज अ बाइंग और सेलिंग, तो यहाँ पे लिख सकते हो. दिस इज अ सेल्स पर्सपेक्टिव, तो डिलीवरी लिखा हुआ है. ठीक है. नाउ ऑथोराइज नेक्स्ट डिलीवरी ये सब ठीक है. यहाँ पे हाँ, कम डाउन टू ओवर हियर. यहाँ पे टाइप होगा. सो टाइप इज व्हाट योर बेसिकली योर आइदर इक्विटी और बॉन्ड मार्केट. नेम, अब कार्ड नंबर है तो उसकी जगह आपका आ जाएगा इक्विटी नेम. से फॉर एग्जांपल रिलायंस, वैलिड अप टू you can write it as 25th June 2022. ठीक है. नाउ पेयर नेम की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कस्टोडियन का नाम चला गया होगा. बट यहाँ पे दो चीज आएगा. से फॉर एग्जांपल क्वांटिटी एंड अमाउंट पर शेयर. सो आई हैव टू मेंशन 1000 क्वांटिटी एट अ प्राइस ऑफ 2500. सो दैट अमाउंट जो ये 75 लिखा है ना, वहां पे 2500 लिख के आ जाएगा. एंड देन आई हैव टू सेंड इट. ओके. एनी अदर इंस्ट्रक्शंस? देयर इज एक्चुअली अ बॉक्स प्रोवाइडेड. लेट मी सी इफ आई कैन हैव दैट. We'll just get a fair bit of little idea only. See यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस पर यूनिट और स्टैंडर्ड प्राइस मेंशन है, टोटल वैल्यू करके यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है. ऑटोमेटिकली इट इज कैलकुलेटेड. डोंट नीड. वैल्यूएशन क्लास इज अ बेसिकली कैटेगरी. तो जैसे हम इक्विटी या लिखेंगे तो उसका न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकता है. बेसिक यूनिट ऑफ मेजर करेंसी INR आ गया तो वहाँ पे कोई दूसरी करेंसी भी हो सकती है. यहाँ पे बेसिक यूनिट क्यों लिखा? क्योंकि सेल्स का है तो पर पीस है, तो वहाँ पे वी कैन मेंशन लॉट इफ इट इज अ डेरिवेटिव. ठीक है. डिवीजन कैटेगरी अगेन करंट पीरियड या प्राइस डिटरमिनेशन, ऐसा कुछ भी हो सकता है. सो डिपेंडिंग कि आपका कौन सा ये मॉड्यूल है ना, आई एम एक्चुअली गेटिंग द इमेजेस ओनली ऑफ दैट सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन. फाइनेंस का स्पेसिफिकली नहीं मिल रहा है, बट ये ऐसा आपका ट्रेड का नोट रहेगा. क्लियर? एवरी डिटेल्स यू विल बी कैप्चरिंग, इट विल बी कैप्चर्ड इन दिस फॉर्मेट. ओके. दिस इज एक्चुअली प्रॉपर वर्किंग ऑफ एसएपी. एसएपी में ऐसे ही होता है. Yeah, online students, any doubt so far in this? No sir. No sir. यही काम करते, इसके अलावा कुछ नहीं. But the module is vast. हाँ, yeah. Tell me. Actually, the module is very vast. See, अगर आप यहाँ पे सिर्फ मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से देखो या सेल्स के पर्सपेक्टिव, तो सेल्स, शिपिंग, तो शिपिंग में भी उसका क्या क्या आ जाएगा. तो शिपिंग नंबर, शिपिंग आईडी, डॉक्यूमेंट नंबर, फिर उसका इफ यू रिमेंबर दैट एवरी कार्टून होगा तो कार्टून के अंदर उसका अलग से नंबर रहेगा, दैट उसका यूनिट नंबर एंड ऑल दोस थिंग्स. देन बिलिंग डॉक्यूमेंट, तो बिलिंग डॉक्यूमेंट विल हैव अ डिफरेंट नंबर. देन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कैसा है, बिलिंग प्लान कैसा है. प्लान इज लाइक 15 दिन के बाद पेमेंट है कि 1 हफ्ते के बाद पेमेंट है कि कैसा है. देन अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव अगर कुछ है. कंडीशंस इज लाइक अगर 1 महीने में पहुंच जाता है तो पेमेंट हैज टू बी डन. सम कंडीशंस विल बी मेंशन्ड बेस्ड ऑन व्हाटएवर द टर्म्स कंडीशन इज एग्रीड अपॉन. तो बहुत सारी चीजें इसमें डाली हुई है. नाउ इट्स नॉट नेसेसरी कि हर एक कंपनी विल बी यूजिंग सो मेनी थिंग्स ऑफ इंफॉर्मेशन. जिसको जो चीज का इंफॉर्मेशन चाहिए वो वहां पे डाल सकता है. वेरी सिंपल. तो ये तो सिर्फ एक मॉड्यूल है. एक मॉड्यूल पूरा सीखने में भी कम से कम 4 या 5 साल लग जाता है एसएपी का. इतना वास्ट मॉड्यूल है. राइट. एंड सेकेंड थिंग इज इसको मॉडिफाई करते रहते हैं. कौन लोग करते हैं? जो आईटी इंजीनियर रिक्रूट होता है अभी, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, जो भी है, they are ABAP डेवलपर्स. AB करके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें ABAP बोलते हैं उसको. ठीक है. तो वो बैकएंड में ये लोग एडिट कर सकते हैं उसको. जैसे फॉर एग्जांपल आई डोंट वांट दिस 3 to 4 फील्ड्स, प्लीज रिमूव इट, तो वो डायरेक्टली वहां से रिमूव कर देंगे.
That's it. Clear? Thoda concept you can now link with the trade life cycle with this. Okay. Okay. Any other doubts? All clear? So next में we will be taking this reference data management and identifiers. Identifier का PDF में बहुत बड़ा टॉपिक दिया हुआ है, but I will keep it short. 5 आइडेंटिफायर का एक ही पर्पस है, to give आधार कार्ड नंबर to a transaction. The only thing is differing is the country या agency या organization. Rest all the things are remaining same. So say for example अगर यहाँ पे वो जो 16341 है ना, so I can say a 5-digit numeric code is being used to identify a transaction. तो कुछ कंट्री बोलते हैं I don't want 5 digit, I will be combining 6 digit numeric plus 3 digit alphabets. तो यहाँ पे AAB या ABB या कुछ भी, मतलब इनको जो भी रखना है they can keep it. Okay. The same format. तो किसी का 12 digit का कोड है, किसी का 15 digit का है. Okay. The only thing that is mattering over here, but the purpose and the usefulness of all the same identifiers or every identifiers is one and the same. ठीक है. बट फिर आपको सिर्फ एक ही चीज क्या करना होता है जब आप जॉब पे जाते हो, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन कौन से कंट्री के ट्रांजैक्शंस मुझे आ रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू दैट. वो 2 या 3 आइडेंटिफायर जो कैटेगरीज है, फिर वो उस टाइम पे आपको याद हो जाना चाहिए कि अच्छा इफ इट इज कमिंग फ्रॉम यूके तो उसका 7 डिजिट होगा, इफ इट इज कमिंग फ्रॉम आयरलैंड तो 10 डिजिट होगा, अगर इटली से आ रहा है तो 15 डिजिट का होगा. तो वो वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, प्रैक्टिसिंग इट, ऑटोमेटिकली आ जाएगा. इट्स नॉट अ बिग गेम ओवर देयर. ठीक है. दैट्स सो फार. प्लीज रिवाइज इट टुडे. ओके. घर पे जाके एक बार ट्रेड लाइफ साइकिल की वीडियोस भी देख लेना ब्रीफ में. डोंट वॉच दैट लेंथी वीडियोस. ओके. प्लीज कीप रिवाइजिंग. हाँ या शेयर सर, प्लीज शेयर पीडीएफ. क्या हो रहा है? पीडीएफ शेयर करो ग्रुप पे प्लीज. पीडीएफ. ओके. लेवल 2. I think I have shared it. I have shared it. Yes, already. ठीक है. ऊपर जाके देख लेना, ऊपर मैसेजेस में कहीं पे ऊपर नीचे स्टैक हो गया होगा. ठीक है. थोड़ा एक्सेल का प्रैक्टिस प्लीज स्टार्ट इट. फिर लास्ट में एक साथ 5 मॉड्यूल करने जाओगे ना तो एक भी नहीं होगा. तो बेटर हर एक 2 दिन में एक मॉड्यूल खत्म कर दो. इतना बड़ा भी नहीं है, हार्डली आई थिंक 8 to 12 आवर्स या मैक्सिमम 16 आवर्स का होता है ये सब. तो जो फ्री है तो एटलीस्ट यू कैन टेक इट. ठीक है. ओके. और कोई क्वेश्चंस वगैरह कुछ होगा तो डेफिनेटली आई विल शेयर फॉर एनी इंटरव्यू स्पेसिफिक. बाकी तो रोल स्पेसिफिक ही अब तो प्रिपरेशंस आपको करना पड़ेगा. सर उस दिन का जो 1500 वो था लाइक 1 लाख इन्वेस्ट किया था. हाँ. नहीं, थर्सडे एक्सपायरी का था. तो क्या हुआ क्या? तो मतलब वो ट्रेड हमको भी दो. आप बोल रहे कि मतलब वो 9-10 साल में ऐसा नहीं, 9-10 साल में नहीं, 9-10 सेशन में ही आ जाता है. साल में आएगा तो कोई इतना बड़ा प्रॉफिटेबल ही नहीं बन पाएगा. लोगों ने पैसे बना लिए, आराम से बना लिए. बट दैट टेक्निक, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर टेक्निकल एनालिसिस. ठीक है. तो ऑप्शन चेन क्या होता है, ऑप्शन रीडिंग क्या होता है. तो इफ जैसे मैंने वो ट्वीट किया था इन द मॉर्निंग ओनली, मुझे दिख रहा था 129 ओपन इंटरेस्ट था. ओपन इंटरेस्ट हमने देखा हुआ है, इफ एवरीवन रिमेंबर्स दैट वॉल साइड, राइट. तो ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड 129 लाख थे कॉल राइटर्स, और यहाँ पे सिर्फ कुछ कितने 47 ऐसा कुछ तो था. तो दैट वाज माय फर्स्ट हिंट. बट सी, ऑप्शन में आप पैसे कब कमाते हो, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक इन योर एंट्री एंड एग्जिट. ये कोई आपका स्टॉक नहीं है कि इन्वेस्ट करके बैठ जाओ और 10 साल 5 साल में रिटर्न देगा. वो आपको दे देगा तो 1 घंटे 1.5 घंटे में ऐसे देके जाएगा. तो फिर टेक्निकल एनालिसिस वहां पे आता है. ठीक है. तो जो ऑप्शन मैंने लिया था, तो आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग इट. और 12:30 बजे तक क्यों मैं ऑब्जर्व कर रहा था उसको, क्योंकि वो मैं आई वाज जस्ट चेकिंग द ओपनिंग स्ट्रेटेजी ऑफ द FIIs कि 12:30 बजे ये लोग क्या कर रहे हैं. ठीक है. तो सुबह से तो मार्केट को ग्रीन में रखा था, दैट इज फाइन. लेकिन पुट का जो प्रीमियम था वो एक्चुअली निकल जाना चाहिए. वाई? एक्सपायरी है तो 0 आना चाहिए ना. तो टाइम के हिसाब से उसका टाइम वैल्यू दैट थीटा डी के उसको बोलते हैं, तो दैट शुड कम डाउन टू 0 एक्चुअली. बट 24 के नीचे ही नहीं जा रहा था. 3 बार गया 24 से रिवर्स. तो देन आई गॉट दैट कन्विक्शन. वो कन्विक्शन आपको भी नहीं आएगा बिकॉज यू आर नॉट इनटू ट्रेडिंग एक्सपीरियंस. ठीक है. तो कन्विक्शन आ गया तो देन फिर एक ही ऑप्शन होता है, या खुद पढ़ो या जो होगा वो देखा जाएगा बाद में. दैट इज ओनली ऑप्शन दैट यू कैन डू. तो फर्स्ट टारगेट 60, सेकंड टारगेट 120, बस उतना था. तो हो गया 230 तक चला गया फिर. बट ऑप्शंस के ऊपर डायरेक्टली
डोंट जंप अपॉन, पहले धीरे धीरे, एंड इफ एनीवन वांट्स टू स्टार्ट विद कैश इक्विटीज, डोंट जंप इनटू ऑप्शंस, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है और कैपिटल कब खाली हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, पूरे साल की सैलरी भी चली जाएगी और फिर भी मैं चढ़ा, तो मैं स्टॉक मार्केट से दूर ही रहूंगा. This is a general convention, people do experience it. I think more than 95% of the people, if I can say, have experienced this. Better अभी वो मत करना. It's not हाँ करना है तो पेपर पे लिख के कर लो, अच्छा मैंने आज ये लिया, आज ये किया, अच्छा इतना प्रॉफिट हो गया, वो देख के खुश हो जाओ. That is more than enough. Paper trading softwares and applications and websites are there. You can check it around. ठीक है, उसमें वर्चुअल मनी लगता है. वर्चुअल मतलब कौन सा, हम वहाँ पे एक शेयर इन्वेस्ट कर दो, लेके आ जाओ, कौन सा जेब से निकालना है वहाँ पे. बट यू कैन प्रैक्टिस लाइक दिस once you learn about all these things. ठीक है, ओके चलो, ओके, closing the session everyone. Thank you. Yeah, online students, thank you everyone. Thank you, sir. Sir, हाँ या हाँ बोलो. please share PPTs for this chapter. क्या शेयर करूँ? PPT अभी आपने सिखाया. हाँ वो ठीक है, क्योंकि नोट्स से बहुत तो लोड फील हो रहा है. ठीक है, ओके.